So hey everyone, good evening. We are almost about at good night only. Okay. So guys, let's everyone join and then we'll start today's live Q&A. And meanwhile guys, let me tell you, recently हमारे एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए सलीमन. सो आई ट्राई एसएप उनके साथ मैं एक वीडियो लेके आऊँ जिससे अगेन आपको पता चले कि रिसेंट में इंटरव्यूज में क्या चल रहा है या क्या चीज़ें चल रही है. यू विल गेट टू नो. एंड वन मोर थिंग गाइस, जब भी आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हो, ओके, व्हेनेवर यू आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट, सो अगर कोई ऐसा कॉमन टॉपिक है यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, लेट्स सपोज कि सबसे ज़्यादा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो ऐसे कुछ टॉपिक्स, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बार. ओके, कि क्या वो टॉपिक्स है जिनके रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा डाउट्स, क्वेश्चंस या प्रॉब्लम हो रही है, ओके, इन योर कैरियर जर्नी. So I can separately make a video on that. So just give me a minute. So guys, first of all, special thanks to Anup जिन्होंने बताया कि मेरा माइक म्यूट है, okay, or else I was speaking from past 1 minute. So yes, your question was, is there any scope in Salesforce or not? Okay guys, confirm me, is my audio is audible or not? Now it is clear. Am I audible to everyone or no? Okay. ठीक है. So yes, coming to Salesforce related to CRM, okay, and I am mostly like what I am aware or I have worked upon that is related to data analysis or data science. So Salesforce के लिए especially आप एक channel explore कर सकते हो, that is like Rohit Puri, okay. So you can connect to him, even he is a trainer in Salesforce, or you can ask questions to him because he is working in Salesforce or dealing with the Salesforce thing. And coming to Salesforce SAP, so demand is good अगर आप CRM साइड जाना चाहते हो तो. Rohit Puri, you can simply write, or you can search Salesforce Jungle, this channel name. So guys, let's start our Q&A. I hope like now we are around 9 people, we can have a discussion. Let's go one by one, guys. You can ask you questions now. What are the common problems you are facing? It can be mostly related to career. That is out of the box as well. I'll be like keeping in mind and I'll be answering you. So you can ask now. So Harsh is asking, sir, can you please tell me how to find job for clinical SaaS? Where to apply? Harsh, see, there are multiple ways. If you want to know these things
in depth, so you can connect to me. There is an option. In general, if I have to tell you, एक मैं सिंपल सी चीज बोलूंगा हर्ष, वैकेंसीज हमेशा रहती है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी हायरिंग चलती ही रहती है. यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू फाइंड जॉब्स. ओके, कैसे जॉब ढूंढते हैं. तो अगर आपने क्लिनिकल साइंस सीखी है, तो जहाँ से सीखा है तो आप ट्राई करो कि आप वहाँ से नॉलेज लो. गाइस देखो, मेरा एक सजेशन है कि आप जहाँ से भी सीखते हो, आप वहाँ से ये भी जानो कि जॉब कैसे ढूंढते हैं और कितना टाइम लगता है. बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल, लाइक ये ज़रूरी है कि आपको जानना, जहाँ से आप सीख रहे हो वहीं से, और जहाँ से आप सीख रहे हो उन्हें बताना कि जॉब कैसे ढूंढनी होती है एंड कितना टाइम लग जाता है. बट अगेन, if you have done self learning and you are asking to me, so in short I can tell you the best way is LinkedIn. Okay, and the best way is you can connect to people who are working professionals. बट उसमें भी आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार आपको वैकेंसीज नहीं मिलेंगी. तो फॉर दैट यू नीड टू हैव गाइडेंस फ्रॉम समवन. ओके, you can even connect to me as well. There is an option one-to-one counseling, or someone who is working in the industry. Okay, or someone who can help you, guide you through entire process. सी गाइज, whenever you learn a software, जब भी आप सॉफ्टवेयर सीखते हो तो वैसे एक लर्निंग का साइकिल होता है. देर इज अ लर्निंग पीरियड. ओके, तब आपको गाइडेंस, सपोर्ट और टेक्निकल डाउट्स होते हैं, उसके रिलेटेड हेल्प की जरूरत पड़ती है. सिमिलरली, while applying as well, or while finding job as well, it is also a process. At that time also you need support, guidance, those things. So अगर आपको नहीं मिलता तो आपको लाइक पता नहीं चलता कि हाउ द थिंग्स वर्क, कैसे चीजें चलती है, हाउ टू फाइंड जॉब्स. दैट्स व्हाई यू मोस्टली हैव दिस क्वेश्चन. Sagar is telling, sir, I have interview in one MNC next week. SAP PPQM consultant. How should I? But sometimes I like, अगर इंटरव्यू के टाइम पे कुछ नहीं हुआ तो. सी गाइस, टेलिंग अबाउट इंटरव्यू. ओके, इंटरव्यू में कैसे क्या डील करना है अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो. सो लेट मी टेल यू अपफ्रंट कि कभी भी इंटरव्यू में आपको ऐसा लगे कि आप, पहली चीज इंटरव्यू की, लेट सपोज टुमारो इज इंटरव्यू, so today what you need to do, you need to complete your slip. Okay, and you need to revise it properly, you need to do the overview of the things. And see, never have a fear of interview. Like, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, they might reject you, you will again get interview and you will again crack it, maybe you'll get better upon shooting. So see, the result is not in your hand. You can give the best in your interview, still like there can be chances you cannot get selected. So what my concern is, you should try your best. Okay, you should give your interview calmly, don't worry about the result, don't worry about you if you forgot few things or not. Just tell them what you know. Okay, if you forget something, like tell them upfront, like, sorry sir, I'm not able to recall right now. Okay, and just you need to learn how you can handle the interview and the pressure during the interview. If you're forgetting some question, that is totally fine. See, ultimately you are getting hired as a fresher, right? So they are also aware these things happen with fresher. So you need to handle the interview, and if you are able to handle, if you are able to do well, you can crack it easily. अंकित इज आस्किंग, बैंकिंग सेस में ज़्यादा स्कोप है क्लिनिकल में? सी, दोनों में अच्छा स्कोप है एंड सैलरी है, बट अगर आपका बैकग्राउंड बीकॉम है तो देन यू शुड गो फॉर बैंकिंग. ओके, Arka is asking, sir, how much time it can take to learn base SAS and complete exam? I guess associate SAS programmer. Okay, the base SAS learning part can take up to 1 or 2 months. I think most probably within 1 month you can complete it, 1 or 2 months max. But depend upon, Arka, how you are learning or from where you are learning. That depend upon. Harsh is asking, sir, I have learned SAS from institute, but they are not providing good placement, and I don't know how to find job, get shortlisted. See, guys, hers have asked a question, sir. I have learned SAS from an institute, but they are not providing good placement. Guys, ये चीज अपने वीडियोस में मैं काफी पहले से बोलता आ रहा हूँ. Okay,
कि अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर आपको बोलता है ना कि मैं आपको यहाँ से प्लेसमेंट दूंगा, तो डोंट बिलीव ऑन दैट, डोंट बिलीव एवर। ठीक है, अगर कल जाके मैं भी बोलता हूँ, इफ आई एम ऑल्सो टेलिंग दैट आई विल बी गिविंग प्लेसमेंट, डोंट बिलीव ऑन मी। बट सी देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। आपको कुछ बनना है तो देयर इज अ प्रोसेस, नो वन कैन टेल यू आई कैन मेक यू दिस। सी अल्टीमेटली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको किन चीज़ों की उम्मीद रखनी चाहिए? सबसे पहले अच्छी ट्रेनिंग, the entire base advance and clinical should be very clear to you. Second thing, you should know how to prepare your CV for the particular role, and that should be, you should get these things from your training institute. Third thing, they should guide you how to apply for jobs and how much time it will take as per the current market. And fourth thing, you should get some like support from your training institute, that in a week or in a month, like, or whenever you get some problem or you're not getting interviews or you are unable to crack, you can connect to them. This support you should get from your training institute, you must. Pratik is asking, bro, I'm working as a vendor master analyst. I have 3 year experience. My salary is 5 LP. It is SaaS course. See, in SaaS, you can get up to, like, let's suppose within 3 years, you can get up to 15 LPA. Okay. Means you can cross 10 LPA easily within 3 years. Suraj is asking, hello, sir, I'm based as certified computer. I'm from a certified PPO till now almost 6 months. Suraj, what you can do, you should continue your current job and look for the job in SaaS. Okay, just continue your current job, don't leave it. And meanwhile, see, अगर अगर आप खाली हो ना, आप में से कोई भी, don't sit idly. Look for some job. If it is not related to something you learn, look for something which is like technical. You are getting some knowledge, but don't sit idly. Okay. स्टार्ट सम जॉब एंड मीनवाइल, लाइक, अगर आपने जो भी चीज सीखी है उसका जॉब भी साथ में ढूंढते रहो. Shamiksha is asking, sir, please, सी रिसेंटली लास्ट 1 या 2 मंथ्स पहले समीक्षा इंटरव्यूज हुए थे, इंटरव्यू वाज हैपेंड. So I think again it will take another 1 or 2 months, because there is a cycle for interviews. Like, let's suppose they have taken a lot of interviews and selection, they have selected candidate. So again interview will happen after 3 or 4 months. So recently a lot of companies have hired, I think last to last month, in clinical. Saurav is saying can't getting calls as a fresher. Saurav, like, for what role you are looking for? Amit is telling, sir, please check WhatsApp message for tomorrow interview. Sure, Amit, I'll confirm your timings. Jagdish, banking versus developer. Banking versus developer. Banking में क्या? Banking is like domain. Banking like data analyst in banking, or what in banking? Shamiksha telling, I'm having 1 year, 4 month experience in clinical sales and complete case. Shamiksha, you can do one thing, you can connect to me. Okay, I'll surely guide you. Arka, sir, it is possible to you make descriptive video with real example like data set to show how actually workflow of a SaaS programmer in a company. That's good, Arka. I'll make it surely. I'm noting down your question right away. Done. Okay. Brown boys, like, 1 2 months back, a lot of interviews happened, a lot of people got selected. Now it will surely take another 1 2 months, because interviews are happening in an interval like of 3 months, 4 months, like this. Sometimes it will come, you'll get interviews all of sudden in a mid, but mostly like there are cycles for interview. Once the interview, like, a lot of companies have hired, they will train to the freshers,
Then after 3 4 months or 5 months again they'll do the hiring. Alok is telling, sir, basis question same as practice question set. Alok, I have already made a playlist on SaaS interview. I have made a playlist. Just go and check on my channel. Uh, Choku Homes. Is Salesforce also a SaaS? Salesforce and SaaS is different. Salesforce, you can say a CRM, and SaaS is like a data analysis tool. CRM is like kind of customer relationship management or CRM tool. Okay, kind of. I'm not sure. SaaS is into data analysis. Here you do the analysis of data. So one is CRM, one is data analysis. Hey Abhishek, Yoga is asking, I'm working mechanical design using CATIA, SolidWorks. Yes, of course, you can learn easily, SaaS. Is it true I should get support from institute because I have paid fees? I'm not getting. Yes, Harsh, you should get support from, like, guys. See, when, like, from wherever you are learning, you should get support from your training institute. Support means, it doesn't means like they should take the responsibility of the placement, but they should at least make you aware. What happens guys, सी एज अ फ्रेशर आप में से बहुत सारे लोग कभी भी इंस्टीट्यूट के पास है ना, आज के टाइम पे जाते हो तो हमारे दिमाग में एक ही चीज होती है, ओके, कि प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं. A lot of students call me and वो मुझे भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं, सर प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं. तो क्या होता है जब आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है ना प्लेसमेंट का, तो बहुत टाइम से इंस्टीट्यूट ने इस चीज को नोटिस किया कि जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन मतलब कॉल कर रहा है वो हमेशा प्लेसमेंट का पूछ रहा है. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दे स्टार्टेड टेलिंग अप फ्रंट कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा. बट गाइज बिलीव मी, कोई भी इंस्टीट्यूट मतलब चाह के भी आपको ऐसा गारंटी नहीं दे सकता कि दे विल गिव यू प्लेसमेंट. बट इंस्टीट्यूट क्या आपको दे सकता है गारंटी में? इंस्टीट्यूट आपको नॉलेज दे सकता है, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा नॉलेज दे सकता है. दे कैन गाइड यू कि कैसे सीवी बनाना है, कैसे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है, क्या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से अप्लाई करना है. दे कैन गाइड यू हाउ मच टाइम इट विल टेक. They can even guide you. Let's suppose they should guide you. Let's suppose if you are getting some problem and आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, बट इफ यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम इन इंटरव्यूज, इंटरव्यू मिला बट सम टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया, आपको नहीं समझ में आया, दैट टाइम यू कैन कनेक्ट टू योर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. अगर इंटरव्यूज नहीं मिले आपको 3 4 5 महीने हो गए, तो इवन लाइक यू कैन कनेक्ट टू देम इन द मिड 15 days में या 1 month में. सर आई एम अप्लाइंग दिस वे, इज इट करेक्ट और नॉट, और वाई व्हाट आई शुड इम्प्रूव. So you should always connect to your trainer or your institute for this, and you should get these things. You should get. Brown boys telling no one company hire fresher, only hire experienced person. ब्राउन बॉयज ये तो एक मिथ है. अभी थोड़ी दिन पहले ही मैंने एक ऑफर लेटर डाला, उससे पहले भी मैं मनीष का एक ऑफर लेटर डाल चुका हूँ. दैट इज अ मिथ. अक्सर ये फ्रेशर को मिथ होता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, व्हाई एवरी जॉब रिक्वायर 1 or 2 year ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, मैं वापस से ये चीज बता दूं. देखो, कोई भी अगर बंदा हायर होता है तो 3 या 4 महीने, 4 या 5 महीने उसकी ट्रेनिंग चलती है. सो फ्रॉम जूनियर और ट्रेनी दे विल मूव टू वन पोजीशन. लेट्स सपोज क्लिनिकल सेस, सो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर वन पोजीशन पे चला जाएगा आफ्टर प्रमोशन. आफ्टर 1 or 2 year दे विल गो टू स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 2 पोजीशन. बट कभी आपने ये सोचा है कि हर वो बंदा जो हायर हो रहा है वो 1 साल या 1.5 या 2 साल में प्रमोशन ले रहा है, मैनेजर डायरेक्टर बन रहा है, और ये साइकिल चलता जा रहा है. ओके, तो यस, जूनियर धीरे धीरे सीनियर्स बन रहे हैं और वो प्रिंसिपल बन रहे हैं, ये साइकिल चल रहा है. तो हु विल डू द प्रीवियस वर्क? पीछे का काम कौन करेगा? फ्रेशर को हायर करना पड़ेगा अल्टीमेटली, राइट? सीनियर विल नॉट डू द फ्रेशर वर्क, राइट? शायद कभी कभार इमरजेंसी में कर देंगे. मैनेजर विल नॉट डू द फ्रेशर वर्क. एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड, एवरीवन इज टेकिंग प्रमोशन आफ्टर 2 3 years मैक्स. ऊपर सी द अर्ली रोल्स, जो नीचे के रोल्स होते हैं 1 2 3 और सीनियर, तो वहां पे प्रमोशन मतलब 2 या 3 years, मतलब 1 या 2 years में हो जाते हैं मोस्टली. ऊपर के रोल पे मैनेजर या डायरेक्टर लेवल पे वहां पे अच्छा खासा टाइम लगता है. तो जब हर लाइक एवरीवन इज गेटिंग प्रमोशन आफ्टर 1 or 2 year, दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पोजीशन, who will do the previous work? Okay, so they need to hire freshers, and likewise the work will go. Okay, so this is a myth that the companies are not hiring freshers.
सर बेसिस एग्जाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट जैसा रहता है। आलोक, इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। बेस ओके, बेसिस एग्जाम के बारे में पूछ रहे हो? यस, हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट जैसा ही रहता है आलोक। प्रीतम is asking how is the current IT market scenarios. Preetham, see, like mostly people need to worry about like whose job are manual, right? Like their work is not that much effective. They are just doing data entry. So those kind of people need to worry. Their work is like kind of data entry, okay? Not other people. Hey Badal, I am doing great. How about you? AKB, hello sir, gap year metal to SAS programming. No AKB. Yes, Abhay, you can. Nimesh is telling, sir, I know skill, but interview I am fear not speak more. How to overcome? So Animesh, you should connect to people like, or you should talk to different people. That's why guys, what Animesh is telling here, na, I know skill. यानी मेरे पास technical skill है. I am having technical skill, but I am having fear while speaking, like in front of people, okay, whom I don't know, or maybe in front of like whenever I'm like with group of people, I'm having that fear. Okay, what Animesh is telling. That's why guys, in our base, like in base after base advanced and clinical training, there are communication and confidence building session I'm taking for students. Okay, in our training we are having communication and confidence building session, like kind of GD, group discussion. And this should be like in most of the, like whenever wherever you are doing training now, they should include this communication and confidence building, because this is very much important for the interview. So now what you can do, Animesh, you can just like, let's suppose you have some random friend, you can start talking to him on call in English 20 or 30 minutes. Okay, or there are some applications as well where you can connect to different like people living in different countries, okay, like in US or Canada, and you can talk to them. There are some free applications you can check on internet. And the another thing is like, you can start reading books as well. That is also good. Harsh is asking, sir, can you make a video how your resume should be for clinical sales position? Uh, for resume, I'll make a video. How to prepare for interviews? I already made a playlist, SAS interview series. Just go and check. Brian boys, again I'm telling the same. Jobs are there, okay, but there is a cycle of hiring. Recently I put ऑफर लेटर, रिसेंटली अभी चार चार इंटरव्यू हुए, ओके, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स रिजेक्ट हुए, कुछ सेलेक्ट हुए, ठीक है। सो इंटरव्यूज आर हैपनिंग, राइट? इट डजंट मीन लाइक लेट्स बी व्हाट इज हैपनिंग। अगर कुछ कोहर्ट को इंटरव्यू नहीं मिला, हाउ इंटरव्यूज हैपन, लेट्स सपोज 100 people are there, okay, and so at a time क्या होता है कि let's suppose 30 people will get the interview, another will not get, क्योंकि 30 people की इंटरव्यू उनके लिए, कंपनी के लिए लेट्स सपोज इनफ हो जाता है। दिस इज अ सिनेरियो, ओके। सो उतने कैंडिडेट का इंटरव्यू लेके उसमें से किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। जब एक टाइम पे इंटरव्यू होता है तो जितने लोग हैं ना, जितने लेट्स सपोज 100 पीपल आर देयर हु नो द नॉलेज ऑफ सैस, बट एट अ टाइम जब वैकेंसीज निकली 30 लोगों को इंटरव्यू मिले, नाउ 10 पीपल विल बी गेटिंग सेलेक्टेड। सो जो 30 लोगों को मिले उसमें से 10 पीपल सेलेक्ट हो गए, तो अब वो 30 लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे कमिंग 2 या 3 मंथ्स इंटरव्यू देने के लिए सेम मंथ सेम कंपनी में, ओके। सो अगेन जब नेक्स्ट राउंड में इंटरव्यू निकलेगा, ओके, तो तब बाकी लोगों को मौका मिलेगा। सो इन अ बैच यू विल गेट इंटरव्यूज, पहले कुछ लोगों को मिलेगा, फिर कुछ लोगों को मिलेगा, एट अ टाइम सबको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। सो देर विल बी ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको इंटरव्यू मिलेगा, और देर विल बी ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ लार्ज पीपल जिनको इंटरव्यू नहीं मिलेगा।
Clinical data analysis and SaaS programmer. See, SaaS programmer role will be in banking, insurance, or any industry. But clinical data analyst will be working in a clinical research industry or in a CRO itself. Arka is asking, sir, one more question. I have curiosity to know that how many team of people involved in SaaS analyst, SaaS programmer role, and what are the difference between SaaS analyst and programmer? See, this role SaaS analyst and programmer that is decided by company. Okay, they can keep you with the role analyst as well. They can keep you with the role programmer. And how many people involved in SaaS analyst and SaaS programmer role? That depend upon the study. आप कौन से इंडस्ट्री में हो, अगर आप क्लिनिकल में हो तो डिफरेंट टीम साइज होगी. स्टडी का भी डिपेंड करता है, स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या है. अगर आप बैंकिंग में हो तब डिफरेंट, मतलब जो काउंट होगा. इंश्योरेंस में हो तब डिफरेंट काउंट होगा. दैट डिपेंड अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड वर्क टू वर्क. ओके, कितने सीनियर्स हैं तो उसमें कितने जूनियर्स रखने हैं या कितने फ्रेशर्स रखने हैं, कितने लीड होंगे. ओके, एंड एट द एंड एक मैनेजर होंगे जो पूरी स्टडी को हैंडल कर रहे होंगे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. So I cannot tell you exact figure, but that depend upon depart, like role to role, कि आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पे कितनी रिक्वायरमेंट है. Shubham Tiwari is asking, I'm a EC student. I have back year. Should I change college to lower level? I'm back here. Should I change college to? Shubham, as per my suggestion, you should complete your education. EC student. I have a back year. Should I change? No, you should complete your education. And along with your education, you should learn the full stack engineering requirement, like front end and back end you can learn. Brown Boys is telling, sir, I'm weak in English. I understand English very well, but hesitate in speaking. Does this affect my job or not? Guys, if you're not good at speaking, okay, or communicating, you don't need to worry. You need to try your best, okay? This all problems related to communication or English you might be facing in the beginning itself. Once you get job, okay, you'll be in that environment that regularly you need to speak in English or write mails, okay, or use the English words. So you'll be gradually improving day by day. And everyone is starting from zero. So why you guys are worrying? Okay. Harsh is asking, sir, I have learned SAS, but how can I master base SAS, advanced SAS, and clinical? Start solving question on the basis of base, advanced, and clinical. And in clinical, you should create SDM, ADAM, and table and listing. Harsh, positions for fresher clinical SAS, that is statistical programmer trainee or junior statistical programmer. So Badal, that is totally fine. Like as you recently started your career, right? It's been I think 1 year maybe. So client challenges is like that is another level problem. Okay. So once you start working with the client, so you might face initially these problems, but after working for 1 2 years, you'll know like gradually how to handle the clients. Sir, front-end developers as developer paid same nowadays. See, it depend upon company to company. अगर छोटी company है, if the company is small, they cannot pay you that much, right? If the company is big, they will of course pay you well. Okay, so either you work on SaaS and full stack.
You can get the same salary or high salary, depend upon company to company. Is BSS certification exam is mandatory for jobs? No. Harsh, yes. But you can check my video how to find jobs. Depth of horror is asking, sir, future of SaaS AI will replace it? Of course, no. See, as an SaaS programmer or statistical programmer, like जब आप उस रोल पे काम करते हो, आप खुद अपने टास्क ऑटोमेट करते हो बहुत सारे. We ourselves like automate our task. हम खुद ही अपने बहुत सारी चीजें ऑटोमेट करते हैं यूजिंग मैक्रोस, डू लूप्स. सो दैट इज ईज फॉर अस ओनली. वो हमारे लिए इजी होता है. Alok is telling, but those who don't have any reference, they struggle. Alok, see, what I believe, जॉब मार्केट या लाइक कॉर्पोरेट जो है वो चलने वाला है. इट डजंट मीन यू शुड हैव रेफरेंसेस. Even people with references, they have to struggle. This is a journey. See, learning a good high paying skill, then applying for it, then cracking for it, this is a process. The day you understand each and everything is a process, you will get or you can do anything. See, learning is one process, applying is one process, cracking is another process. In each of the part, you need to face some difficulties. But if you have someone who can guide you and train you, the process will become easy. It doesn't mean, let's suppose you're some friend or your sister or brother or someone working in this industry, if you think like, okay, you can easily get a job after learning, that's not the case. You need to go through these processes. That's how you become deserving. तभी आप उस लायक बनते हो. Harsh is asking, sir, how to have updates of. Harsh, I already made a video on this, how to find jobs in clinical SaaS. Animesh is asking, sir, I'm applying for many Java jobs. Respond or not coming. Okay. Animesh, you can connect to me. There is an option one-to-one counseling. Maybe I can guide you. निखिल बोल रहे हैं, सर कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फेक इंटरव्यूज एंड फेक रिव्यूज लगा के स्टूडेंट लोगों को लूट रहे हैं, उनको एक्सपोज करना. निखिल, एक बार पता है मैंने वीडियो बना दी थी इस चीज़ के ऊपर. एक इंस्टीट्यूट था, मैंने उनका नाम हाइड कर लिया था और उनका जो रिव्यू था ना, उनके रिव्यूज में बता रहा था गूगल पे कितने पॉजिटिव रिव्यूज हैं. बट एक्चुअल में मैं वो इंस्टीट्यूट को जानता था. ओके, इनडायरेक्टली मैं जानता था. तो वो इंस्टीट्यूट को मैं जानता था, मुझे पता है कि वहाँ पे कैसा, मतलब देखो गाइस, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ. आपको कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे मिल जाएंगे ना, इनसे तो दूर ही रहना. कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे क्रैश कोर्स, 3 दिन का कोर्स या 4 दिन का कोर्स कर लो और फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा. उस सर्टिफिकेट के बेस पे हम आपका इंटरव्यू करा देंगे और आपकी जॉब लग जाएगी. टोटली फेक होता है. 4-5 दिन में ना कुछ आप सीखते हो, ना वो सर्टिफिकेट जो देंगे उसकी वैल्यू होगी. आपके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, जॉब मिलने की तो दूर की बात है. कोई भी कंपनी ऐसे थोड़ी कैंडिडेट हायर कर लेगी. ओके. एंड दूसरी चीज, कोई भी ट्रेनिंग जो सिर्फ 1 मंथ की हो या 2 मंथ की हो, मोस्टली सिर्फ 1 मंथ की, और वो बोले कि 1 मंथ की ट्रेनिंग में हम आपको ये करा देंगे वो करा देंगे, डोंट बिलीव गाइस. किसी भी चीज को सीखने में अच्छा टाइम लगता है. ओके, नो डाउट. अगर आप अच्छे से अच्छा भी करते हो, टाइम अच्छा खासा भी देते हो, तो भी मान के चलो 2 महीना तो लगना ही लगना है. ओके. सो व्हाट आई बिलीव, कोई भी स्टूडेंट्स को अवेयर होने की जरूरत है. आप जब सोचते हो ना कि मुझे ये बोल रहा है और हो जाएगा, तो गाइस कोई भी चीज़ ऐसे कैसे हो जाएगी. पहली चीज़, आपको अच्छे से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. ओके, आपको अच्छा टेक्निकल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर.
अच्छा टेक्निकल नॉलेज यानी कहीं पे भी आप खड़े होगे तो कोई भी आपका रिस्पेक्ट करेगा. If you are able to perform good in technical, the people will respect you, that what you have learned you have actually learned. Then you should aware about the applying part, how you should apply. Okay, and then you should know how much time it will take in this part, learning part, applying part, and cracking part. As per my knowledge, as per my experience, it will take 8 months, the day you are learning, to the date you can get a job. This is an average scenario. So yeah, a lot of institute are there जो मतलब फेक लगा के और प्रॉमिस करके प्लेसमेंट करते हैं. बट सी एट द एंड ऑफ द डे आपको सोचना ज़रूरी है ना, कि स्टूडेंट को सोचना ज़रूरी है. अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है, अच्छा नॉलेज नहीं दे रहा, आपको गाइड नहीं कर रहा, प्रोसेस नहीं बता रहा, लेकिन आपको बोल रहा है प्लेसमेंट दे देगा, तो आपको सोचने की ज़रूरत है हाउ इट कैन बी पॉसिबल. ओके, तो मेरा हमेशा वो ओपिनियन रहता है कि प्लेसमेंट तो एक एंड गेम है जो कि उनके हाथ में होता ही नहीं है. बट लर्निंग, देखिए यू शुड मेक, मतलब दे शुड मेक श्योर आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, दे शुड मेक श्योर दे आर गाइडिंग यू. अगर ये दोनों पार्ट स्ट्रांग हुआ ना तो यू कैन क्रैक. बट अगर आप डिपेंडेंट हो उनके ऊपर कि वो आपको जॉब लगा देंगे, आपने नॉलेज भी नहीं लिया, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया भी नहीं, दे हैव इवन नॉट गाइडेड यू, देन लाइक तब चीज़ें खराब हो जाती हैं. Akka is asking, sir, if SaaS company offer their employee to work from home. Yes, Akka, recently one of our student got selected. He got work from home from the as a fresher itself. Okay, the company name is Efficacy. Two of our students got selected in Efficacy, and they both got work from home from the beginning itself. Vittal is telling, sir, hello sir. Now I have chosen career from mechanical to software development. Vishal, I can make a video on that. Okay, mechanical to software development. Deva Bhav is telling, sir, artificial intelligence use instead of SaaS in future. See, Google is not replacing you, not Chat GTP is replacing to anyone. Okay, only the jobs that is manual data entry like this work will have to fear. Artificial intelligence is not going to kill the jobs. That is going to automate the jobs which is repeatable. The same thing you are doing again, again, and again. Coming to clinical SaaS programmer or SaaS programmer, we have diversity of work, a lot of work. It cannot be automated. You are not just doing data entry kind of. You are analyzing the data, you are making sure the data is correct, then you are building some like you are following some standards, then you are again interpreting some variable and observations. Okay, the observations, then again you are making a report. A lot of work is there for this role, so automation is difficult. As in SaaS programmer itself, I have told a lot, we have automated our work. Let's suppose something is repeatable, so we by ourselves use macro and automate that. Vittal is asking, front end or back end or full stack. See, if you are fresher, if you don't love coding, you are just moving for growth and money, then choose back end. Okay, full stack is difficult, and the combination of front end and back end, the combination of front end and back end is called full stack. The person who have the knowledge of front end as well, back end as well, they can call themselves full stack. So back end, just go for back end or front end, don't go for full stack. Yuraj, a lot of websites are there. You can check on Google. Tron, for this, you can connect me. Harsh, Harsh, for that, you can connect me. There is an option. Rajan, yes. निखिल बोले सर डेटा ज्ञान का यूट्यूब चैनल पे है, बहुत लूट रहा है डेटा ज्ञान.
करके यूट्यूब पे चैनल है, बहुत लूट रहा है। रंजन सर करके है, पेड कोर्स लगाया है, कमेंट्स में मेरे फ्रेंड को सर्टिफिकेट दे रहा है, पॉजिटिव कमेंट्स करो कह रहा है। गाइज, ये ये एक सिनेरियो बताता हूँ, पता है आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि ऐसा लोगों को बोला जा रहा है, ऐसे फीडबैक अच्छे रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो लाइक इट इज डिफिकल्ट गाइज, लाइक इंटरनेट के वर्ल्ड में जितना आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिली ना, अब उतना ही फेक इंफॉर्मेशन भी मिलने लगा। द प्रॉब्लम इज लाइक उस वे में जा रहा है कि कहीं कहीं पॉजिटिव वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब इवन द थिंग्स आर नॉट वेल, पॉजिटिव एक वो करने की क्रिएट किया जा रहा है। सम इंस्टीट्यूट आर डूइंग सो। सी, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको अच्छे से पढ़ा नहीं रहा एंड दे आर टेलिंग लाइक प्लेसमेंट और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, तो मान के चलो वहाँ पे चीज़ें सही नहीं है। अगर कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा है एंड आपको पूरा प्रोसेस बताने पे पूरा फोकस कर रहा है, जैसे कि पहले टेक्निकल, then like they are guiding you for jobs as well, they are giving you support as well after like after completing the course की complete होने के बाद भी जॉब के रिलेटेड या उसके रिलेटेड you can just connect with them, so mostly trust on them, or like those who are telling like they'll give you placement, ignore them, okay। प्लेसमेंट इज नॉट समथिंग कि कभी बिलीव मत करना कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट ऐसे दे देगी। इंस्टीट्यूट से हमेशा ही उम्मीद करो कि वो आपको अच्छा नॉलेज दे और गाइड करे। दोज टू थिंग्स आर ओनली देयर। हर्ष बोले सर हाउ मच फीस। हर्ष यू कैन कनेक्ट टू मी। निखिल बोले फेक एक्सपीरियंस लगा के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिलवा रहा है एंड द मेन टीचर कॉल्ड रजन सर ही हैजंट शोन हिज फेस वंस। फेक एक्सपीरियंस लगा के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिलवा रहा है। सी, अगर कोई फेक एक्सपीरियंस देके आपको जॉब लगा रहा है और आपकी लग रही है, मैं फेक एक्सपीरियंस का किस्सा बताता हूँ। फेक एक्सपीरियंस में से कैसा होता है पता है, 100 लोगों में से लेट सपोज फेक एक्सपीरियंस के लिए 100 लोगों ने अप्रोच किया, उसमें से 10 लोगों की ही स्टोरी सक्सेसफुल होती है, बाकी 90 लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, उनका नहीं होता। और अल्टीमेटली जो उन्होंने पैसे लगाया वो भी वेस्ट वेस्ट हो जाता है। व्हाट आई बिलीव गाइस कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, आप अपने लिए टाइम स्पान वो रखो कि इतने महीने ट्रेनिंग को लगेंगे, इतने महीने जॉब को लगेंगे। 8 या 9 मंथ्स का आप एक कूलिंग पीरियड रखो कि सीखने से लेके जॉब लगने तक इतना टाइम लग ही जाएगा, ओके। सो आपको चीज़ें ग्रेजुअली मिल जाएंगी, आपको जॉब मिल ही जाएगी। द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसेस, दे टेक द प्रोसेस एंड समटाइम्स दे लीव द थिंग्स देयर ओनली। ट्रेनिंग ले ली, फिर चीज़ें कुछ टाइम नहीं अच्छी हुई, दे लीव इट, दे गो फॉर समथिंग एल्स। But you need to understand that like the day you started from zero, it took 4 months to learn at 60 or 70%. Similarly, the day you started applying, it will take another 4 months to get interviews or to crack it. एक ही विषय सैस प्रोग्रामर का जॉब मुश्किल होता है या इजी होता है, मैंने सुना है। एक ही भी ऐसा नहीं होता, इट डिपेंड अपॉन कि आपको कितना टेबल लिस्टिंग, आपको कितना टास्क एलोकेट हुआ है, ऐसे 8 या 9 घंटे नहीं होता। लेट मी टेल यू, एज अ फ्रेशर आपको वो क्रिएट करने में 7 या 8 घंटे लगेंगे। जैसे ही आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, 6 मंथ्स या 1 ईयर, आप सेम चीज़ को 3 या 4 घंटे में क्रिएट कर सकते हो। सो इट्स नॉट अबाउट कि 8 या 9 घंटे लगते हैं। ईजिली यू कैन फिनिश योर वर्क विद इन 5 और 6 आवर्स। जब डिलीवरी का टाइम होगा, डिलीवरी यानी स्टडी को जब सबमिट करना होगा, ओके, सबमिशन का टाइम होगा, उस दिन, सबमिशन हर रोज नहीं होता, ठीक है, मे बी इन अ मंथ, मे बी इन 2 मंथ, मे बी इन 3 मंथ। तो जब सबमिशन होगा तब आपको शायद लेट सपोज कल सबमिट करना है, तो आज हमें वो क्लोज करना रहता है, जितने भी कमेंट्स होते हैं, जितने भी करेक्शन करने होते हैं, वी नीड टू क्लोज दैट। सो इन दैट केस टाइम लग सकता है, बट इट्स नॉट द केस कि हर रोज यही काम इतना टाइम देना पड़ता है, नो। Roman is telling, sir, please start on batch. That's the line. Roman, of course, you can connect to me. Vittal is telling, sir, average how many students needed from scratch to be hired? Yeah, hours to study.
See, for there are two ways. It depend upon you're learning by your own, okay, and you're learning from any training institute. So if you are exploring everything by your own, the time can take depend upon you. Okay, how the plan you have made. But I can tell you the overall scenario within a span of 4 or 5 months. You can learn anything, at least at that much level that you can uh, easily and confidently give any interview, and even you can crack interview with the learning of 4 to 5 months. But the whole process, the learning process will take 4 months. Another 4 months will take for the applying and cracking part. So the whole process can take up to 8 months, and the learning process can take up to 4 or 5 months max. Naseem, yeah, of course. Global villages. I'm cab driver. I've completed master in data science, trying to find job. All is vain. Global villager, you can connect to me. There is an option one-to-one counseling. I'll surely help you. I'll guide you. Okay, step by step. Beautiful vlogs is telling, sir, what's the fees of the course? Beautiful vlogs. For that, you can connect to me. There are multiple options. Chill Pills is asking CDM programmer से statistical programmer switch कर सकते हैं? Of course, Chill Pill. CDM and statistical दोनों में SAS use होता है. Okay. So guys, like I believe आज थोड़ा live में हम late हो गए. We are 18 people live, but I can see still 10 likes. Why so? ये free में like करने में इतना कंजूस हुई क्यों? Why you are saving your likes, guys? Vittal, I am a trainer for clinical SAS. I'm training to students like from past 2+ years. Even my one of the student I was recently checking his profile, he got experience of around 2 years. And my first student, I do remember his name was Ashutosh Lathuria, and I'm having a video with him on my channel, guys. Go and check. And now it's been 2 years to him. He got a job. Vittal art, like what do you want to know about SAS? For SAS, I already made a lot of videos. ब्यूटीफुल ब्लॉग्स इज आस्किंग सर मैं बी फार्मा में काम कर रहा हूँ, क्लिनिकल रिसर्च में एंट्री लेने से हम सीडीएम में प्रमोशन पे हो सकता हो. व्हाट्स द डिफरेंस इन मूविंग टू सैस? सी सैस एक सॉफ्टवेयर है, ये 2 पोजीशंस पे यूज होता है. ओके, 2 या 3 पोजीशंस पे. सबसे वेल नोन पोजीशन और लाइक हाई पेइंग पोजीशन है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, ओके, इन सीआरओ इंडस्ट्री. एंड सेकंड इज सीडीएम. ये 2 पोजीशंस पे सैस यूज होता है. दोनों में ऑलमोस्ट सैलरी सेम रहती है. 10 या 20% का डिफरेंस है. 20% हाई मिलता है स्टैटिस्टिकल को, और जो इनकी सैलरीज होती है ना एंटायर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाई होती है. द बेस्ट पार्ट इज दैट, सी सारे डिपार्टमेंट सारे रोल इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक्चुअली अगर सैलरी के टाइम पे बात करोगे तो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की सैलरी बहुत ही हाई होती है. लेट मी टेल यू वन एग्जांपल. एज एन फ्रेशर यू कैन गेट अप टू 10 LPA. बट अगर मैं ये बोल रहा एज एन फ्रेशर यू कैन गेट अप टू 10 LPA, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको ही 10 LPA मिल जाएगा. ये जो बड़ी कंपनीज हैं कुछ, उनका स्टैंडर्ड पे है कि अगर वो हायर करती है तो आपको 8, 9 या 10 LPA देंगी ही देंगी. रोमन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. I'll have a count on that कि कितने स्टूडेंट प्लेस हुए. ओके गाइस, सैलरी के ऊपर what is the salary of SAS programmer? I already made video on that. You can go and check.
So guys, I think I have answered most of the questions. If you have any more question, you can quickly ask me, or else we can end this live session for today and we can connect tomorrow. So tomorrow we'll connect early. Okay, tomorrow most probably we'll connect around 9:30. So guys, every Saturday and Sunday we can connect at 9:30, and every Saturday and Sunday I'll give you some crucial information, especially for the people who are learning SaaS, okay, who wants to make their career in SaaS. Even I'll share you the recent interviews, some of the companies who have taken the interviews recently, जिससे आपको पता चलेगा recently कौन सी कंपनी ने इंटरव्यू लिया है SaaS में, okay. And even I'll share you the recent selections in, candidates as well, like I'll share you the information कैसे उनका selection हुआ. So guys, chalo फिर I think we are done for today. Bhavya, in SaaS mostly it's about job. They will mostly hire you. It's nothing like internship in SaaS mostly. So guys, good night everyone. Let's connect tomorrow at 9:30 because आज 12:13 already we got late for today. Naseem, tomorrow guys, जिनको भी like tomorrow I'm going to upload one video, and that I'm going to explain, okay, how to find best clinical SaaS training institute. Okay, the video will be in Hindi, and the video will be about how to find best clinical SaaS training institute. You can watch the video, that will give you a clarity how to find a training institute. Okay, especially in clinical SaaS. Even the other people who are looking for training institute, so they can watch that video, because that video will clear your doubts to find a good training institute or how to identify a good training institute. Okay, so guys, that's it for today. Let's meet tomorrow 9:30 p.m. We'll again connect at live. And meanwhile today, bye bye everyone. Thank you everyone, and good night everyone.